स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स की बात करें तो बोन से जहाँ मसल कनेक्ट रहते हैं वहाँ पर जो पेशियाँ होती है उसको टेंडन बोलते हैं। उसके ऊपरी आवरण जो है मसल्स का एपिमाइसियम, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, पेरीमाइसियम और अंदर की तरफ जाओ एंडोमाइसियम, और मसल के अंदर जो मसल्स फाइबर्स हैं वो रहते हैं। टेंडन वह हिस्सा है मसल्स का जहाँ पर यह किसी बोन के साथ जुड़ती हैं, उसको टेंडन कहा जाता है। मसल्स मास और अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है टिनी ग्रेन्यूल्स है, मसल फेसिकुलाइज, बाहरी जो लेयर आवरण है उसको एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम रहते हैं। मायोफाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिली आर द फाइन पैरेलल filaments present in sarcoplasm of the muscle cell. Myofibrils run through the entire length of the muscle's fiber. Microscopic structure of myofibril. Light microscopic studies show that each myofibril consists of a number of true alternating bands, which are also called the segments or discs. These bands are formed up by muscle protein. The two bands are light band or I band, dark band or A band. Here you will see a sarcoplasm unit of the muscles, myofibril, A band, Z line, A band dark band है और Z line A band और I band के बीच है। H zone light band or I band. Light band is called isotropic band because it is isotropic to polarized light. When polarized light is passed through the muscle's fiber at this area, light rays are refracted at the same angle. Dark band or A band. Dark band is called A anisotropic band because it is anisotropic to polarized light. When polarized light is passed through the muscle's fiber at this area, the light rays are refracted at different sections and is equal to not isotopes. Dark band is also called Q disc, Q quadriceps या cross disc. I band is divided into two portions by means of a narrow and dark line called Z line or Z disc in German. Joinske between disc. The Z line is formed by a protein disc which does not permit passage of light. The portion of myofibril in between two Z lines is called sarcomere. दो Z line के बीच का जो पोर्शन है वो उसको सार्कोमियर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सार्कोमियर. Sarcomere is the unit of the muscles. Here you will see muscles के अंदर myofilaments are of two types, actin filaments and myosin filaments. H zone, A band, M line and Z line. Sarcomere in resting muscles, I band, Z line, actin filament which are attached to Z line and myosin filament between two actin filaments, one myosin filaments formed. During sliding filament theory, they retract and comes in a relaxation position. Smooth muscles
स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्रेटेड प्लेन या अरेखित होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस एक होता है। द मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स in the form of seeds, bundles, or sheaths around other tissues. Smooth muscles form the major contractile tissue of a various organ. Structure in which smooth muscles fiber are present. Wall of organs like esophagus, stomach, and intestine. In the gastrointestinal tract, ducts of digestive glands, trachea, bronchial tube, and alveolar ducts of a respiratory tract. Ureter, urinary bladder, and urethra and excretory system. Wall of the blood vessels and circulatory system. Mammary glands, uterus, genital ducts, prostate glands, and scrotum in the reproductive system. Iris and ciliary body of the eye होता है।